अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोलिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होती है जी। तो पोलिनेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब जो एंथर होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है जी। ये जो एंथर है असल में हम कहते हैं दिस इज़ द मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टिग्मा जो होता है दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ मेल पार्ट से फीमेल की तरफ पोलन ग्रेन का जाना दिस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है जी। द एंथर स्प्लिट्स ओपन। असल में होता क्या है कि जो एक स्ट्रक्चर होता है एंथर का, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी। तो होता क्या है एक्चुअल में, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इफ़ यू वांट टू सी आई विल शो यू अगेन। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ऊपर वाला एंथर है और नीचे वाला फिलामेंट है। एंथर के अंदर असल में पोलन सैक्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे आपको बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। सो एक्चुअली दीज आर द पोलन ग्रेन्स। तो जब ये एंथर ओपन होता है, जब ये मिच्योर होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये सैक्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर देन कैरिड अवे ऑन द बॉडीज़ ऑफ द इंसेक्ट्स। या तो इंसेक्ट्स के ज़रिए से वो किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर या उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर चले जाते हैं, या फिर ब्लोन बाय विंड और मे बी लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और द सेम फ्लावर। हमने पढ़ा था अगर सेम फ्लावर के ऊपर गिरे तो वो हर्मेफ्रोडाइट कहलाता है या बाइसेक्सुअल कहलाता है, और अगर किसी और फ्लावर के ऊपर गिरे तो वो, अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट इकट्ठे नहीं हैं, तो वो मोनोसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल होता है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकती है इस बेस के ऊपर, और या फिर हो सकती है विंड पोलिनेशन। तो ये मैंने आपको पहले भी डिफरेंस इनका बताया हुआ है। तो असल में इंसेक्ट पोलिनेशन ल्यूपिन फ्लावर्स हैव नो नेक्टर। देखें जी, कुछ ख़ास अडेप्टेशन नेचर की तरफ से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके। तो उसमें मैंने बताया कि इंसेक्ट पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड का डिफरेंस क्या है। तो ल्यूपिन फ्लावर्स है नो नेक्टर, कोई नेक्टर नहीं होता। द बीज दैट विजिट देम कम टू कलेक्ट पोलन विच दे टेक बैक टू हाइव फॉर फूड। अदर मेंबर्स ऑफ द लुपिन फैमिली, जिसे लिगुमिनेसी फैमिली होती है, जैसा कि क्लोवर है, डू प्रोड्यूस नेक्टर। द वेट ऑफ द बी व्हेन इट लैंड्स ऑन द फ्लावर्स विंग्स pushes down these two petals and the petals of the keel. The pollen from the anthers has collected in the tip of the keel, and as the petals are pressed down on the stigma and the long stamen push the pollen out from the keel onto the underside of the bee. The bee with the pollen grain sticking to its body then flies to another flower. If this flower is older than the first one, it will already have lost its pollen. It means if the pollen is already the new on which plant the flower the insect is going is already or older than the from which it carries, there will be no pollination, there will be no fertilization, and no young plant. When the bee's weight pushes the keel down, only the stigma comes out and touches the insect's body, picking up pollen grains onto the sticky surface. Lupin and the wallflower are example of insect pollinated. ठीक है जी। These are the examples which are the flowers. Lupin and wallflowers are the example of insect pollinated, and the wind pollination, actually grasses and the cereals and many other trees are pollinated not by insects, by the wind. The flowers are the often quite small with the inconspicuous green leaf-like bracts rather than the petals. Actually, what is meant by inconspicuous means actually unclear or the ambiguous. So here they produce no nectar. The anther and stigma are not enclosed by bracts but are exposed to the airs. The pollen grains, being light and smooth, may be carried long distances by the moving air, and some of them will be trapped onto the stigma of the other flower. Okay, is that clear? If you want any confusion, you can comment in the grasses. At first, the feathery stigmas produced from the flower, as we know, actually the difference between the already we have discussed. Now I am going to just reading later. And the anthers hang outside the flower. The pollen sac splits and the wind blows the pollen away. This sequence varies between the species. Actually, there are so many species, so there are many adaptations according to the wind pollination or the insect pollination. So insect pollinated flowers are considered to be adapted in various ways to their method of pollination. The term adaptation implies that in the course of
evolution, structure and physiology, actually anatomy and physiology. Physiology is actually the function, study of functioning, and structure is the actually study of anatomy. So these are adaptations which I have discussed in my previous lecture. Thank you very much.